Good morning, dear students. Today we will learn about our new chapter that is very interesting chapter, that is algorithm and flowchart. And this chapter that is based on stepwise and logical thinking. So student, let's start our chapter stepwise and logical thinking. With the help of stepwise and logical thinking in our computer science area, we have to make very different program, and through that program we have to reach in built in different types of software. For example, you play game online, that is also a example of programming, that is step by step logical thinking. So here the term is programming is a word of possibility at your fingertips. Writing a program involves three steps. Three steps to write a program. First one is writing an algorithm. Second is designing a flowchart based on the algorithm. And third is converting the flowchart into program. So here three basic steps to write a program. First one is write an algorithm. Second, designing a flowchart according to that algorithm. And third one is converting the flowchart into program. So let's understand about what is algorithm. Algorithm is a step-by-step process to get or achieve any useful information. For example, if we are going to make tea, then we have to first collect materials that is required for making tea, then we process, and then we got output as a tea. Okay, so this is the basic step to make tea. So here this is the step by step process how we make tea. So this is called a algorithm, step by step process to got any useful information. Okay, so here the term an algorithm is a sequence of instruction that are used for solving a problem in systematic way. Another example, that is you are ready in morning to come to school. So there from morning start and you come at your school, there were different steps that you follow. Okay, fresh, bathing, breakfast, dress, and then you come to school. So this is the step from coming school to home. So this is also a algorithm. Now here is the example, making mango shake. First we take materials to make mango shake, then all materials in mixture, then processing. This is called processing, and here you got the output, that is mango shake. So three process: input, processing, and output. Okay, so this is the step to make mango shake. So this process steps is called algorithm. Characteristics of algorithm. Instructions are in proper order or sequence. In algorithm, our instructions are in proper order. Each step of algorithm must be precisely defined. Each step in simple way, that is defined. Here you see na each step that defined proper way. Now third one is the algorithm stop after a finite number of instructions are executed. When these instructions executed, then our algorithm stop. That means we got mango shake. Okay, so these are the three basic characteristics of algorithm. Now developing an algorithm, how we develop a algorithm for any type of program. First one is define the program clearly. Second, list the input according to that problem. Third one is describe the step needed to complete the task. And fourth one is choose data set to verify that the algorithm work. So these are the four developing steps for an algorithm. First, define your problem clearly, list all input according to that problem, describe the step that you have needed, and choose data set to verify that algorithm work. दैट मीन्स कि जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है.
Now here is the example of algorithm. Algorithm to calculate the sum of two numbers. Okay, so first step is read the number a and b. Second step, add both number a plus b, and third, display result. As we do in our copy na, first we take two number, then we add both number, and third we got sum of that number. So this is the step to got the sum of that both numbers. So this is called algorithm in English way. Now second example is algorithm to calculate the square of a number. That means 4 multiplied by 4 is square of a number. As you in math study in pattern chapter. So step 1 is read the number. Calculate square, that is n multiply by n. Here we take the value of n, either 1, either 2, either 3, either 4, as you wish. And third one is display result. So algorithm is the step by step process to got any useful information. We write in this English, all these instruction in English, okay, in algorithm. Now flow chart. What is flow chart? A flow chart is a pictorial representation of problem solving process in which steps are laid out in logical order. Student, which instruction we have follow in algorithm? We simply with the help of flow chart we display or present with diagram. That means विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. जो भी प्रोसेस हम एल्गोरिदम जो हमने बनाया है उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब हम उसका एक बनाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट. इसीलिए क्या क्या है कि फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल representation of problem solving process in which steps are laid out in logical order. For flow chart different डायग्राम्स और कह सकते हैं सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं टू मेक आवर फ्लो चार्ट. हियर द फर्स्ट सिंबल इज स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल. किसी भी एल्गोरिथम बनाने के बाद जब हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उस फ्लो चार्ट का भी स्टार्टिंग और एंडिंग होगा. जैसे आपका एल्गोरिथम का स्टार्टिंग और एंडिंग है, ठीक है. प्रोसेस कोई भी आप स्टार्ट करते हो तो उसका एक एंड होता है ना, ठीक है. तो जस्ट लाइक दिस इन फ्लो चार्ट, फॉर स्टार्टिंग फ्लो चार्ट एंड फॉर एंडिंग देयर इज द सिंबल ओवल शेप and this is for start and stop the flow chart. This is input output box, which value have to enter and when we got output, so this symbol we will use. This rectangle shape that is called process box. That means a plus b, that is processing, and multiply by n for squaring number, that is processing. So we write this in flow this process box. This is your diamond shape, that is decision box. For any conditional statement we use decision box. This is your flow line, ठीक है, to connect the symbols. And this is your connector to connect the various section of a flow chart. So these are the symbols that we will use in flow chart to make the instruction of our algorithm. Now here we see rules to create a flow chart. Here is some simple rule that define here to create flow chart, how you will create flow chart. Every flow chart had start and stop symbol, ठीक है. हर एक flow chart का एक start और stop symbol होगा. Only one flow line comes out from a particular symbol, ठीक है. जो flow lines, for example, if this here any symbol, so this way flow lines come, ठीक है. तो एक order में flow lines होंगे. The general direction of flow in a flow chart is from top to bottom, from टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट. जो फ्लो चार्ट का जो हमारा फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Now fourth one is only one flow line is used to connect the start and stop. For example, when we start a flow chart there is one connecting line used, okay. And fifth is decision box that has only one entry point. And here you see
this is your decision box and one entry point and two exit point. Okay, two exit point. Now, advantage of flowchart. Why we will need to make flowchart? If there is advantage, there is limitations of flowchart also. Okay, so first we learn about advantage of flowchart. It is a convenient method to solve problem and communicate the logic to other. It is an important tool for planning and designing new system. You can analyze a problem effective way with the help of फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के थ्रू हम ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. इट एक्ट एज अ गाइड और ब्लू प्रिंट वाइल प्रोग्रामिंग ऑन द कंप्यूटर. It facilitate troubleshooting. It promote logical accuracy. Okay, so these are the advantage of flowchart. Now, limitations of flowchart. Sometime a program logic become cumbersome. In such a case, flowchart look a complex and clumsy. So, student, for any problem, if we make a flowchart, that it will become complex, that is not understand by people. So here, this is the limitation of flowchart. If a program need alteration, its flowchart may have to redrawn completely. For example, if we make two डिजिट सम फ्लो चार्ट, ठीक है, 2 डिजिट का हमें सम करना और उसके लिए अगर हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें हमें डिजिट चेंज करना है तो फ्लो चार्ट हमें अगेन बनाना होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम 4 की जगह 3 लिख दें तो हमारा करेक्शन हो जाएगा. सो वी हैव टू मेक अनदर फ्लो चार्ट इफ देयर इज एनी चेंजिंग डन इन फर्स्ट फ्लो चार्ट. ठीक है, सो वी हैव टू रीड्रॉ अगेन. It is quite costly to produce and difficult to use manage. So this is all about how we create flowchart, advantage of flowchart and limitation of flowchart. Now some example of flowchart we have learned here. Simple flowchart. The first one flowchart is multiplication of 3 numbers. So here we start. Okay, start, read A, B, C, that is 3 number. Here you take any number. Okay, but product is equal to A multiply by B multiply by C, and next we got print product and our flowchart is stop. So student, here you see this is your starting point. Here we give input in this shape. Okay, and processing, that is in rectangular shape box. Output, that is this shape box, and last termination, that is oval shape. Okay, so here are another flow chart. Example number 2 is flow chart to perform arithmetical operation to get the sum, difference, product and quotient of 2 number. Example 3 is flow chart of finding difference between two specific value, that is 50 minus 30. Okay, by mistake in flowchart written 20. Okay, here in question given 30 but here given 20. Okay, so you correct here. So this is the example of flowchart as we do in our copy. So in this way we write in English and we use symbols to make our flowchart. Now, flowchart based on condition. Flowchart based on condition. That means here some different types of flowchart with the condition, that is here a flowchart to find the greatest number among 3 numbers. Okay, ऐसा अगर हमें मैथ में करना होता था, अगर 3 नंबर्स हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू गाइड गॉट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता था, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कंपैरिजन करते थे ना कि ये इससे बड़ा है कि नहीं है, और अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो फिर हम दूसरे को चेक करते थे. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, तो फॉर दिस पर्पज वी विल यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स. ओके, सो स्टार्ट हियर, रीड ए बी सी. ठीक है, नाउ इज फर्स्ट वी चेक इज ए इज ग्रेटर देन बी. अगर ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है, तो अगर यस है तो डिसीजन बॉक्स हमारा इसके अंदर क्या राइट होगा, इज ए इज ग्रेटर देन सी. अगर यस है तो ए आपका प्रिंट हो जाएगा,
अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, यस हो रहा है, तो हमें ए आउटपुट मिल जाएगा। ए अगर सी से बड़ा नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन नो होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट सी। ओके, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स जा रहा है, नो जा रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, इज बी इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, अगर बी ग्रेटर देन सी होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट कर देगा। इफ़ दिस कंडीशन फॉल्स, दैट मीन्स अगर ये नो हो रहा है कि बी ग्रेटर देन सी नहीं है, देन इट प्रिंट सी। तो आपका ये फ्लो लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड एट लास्ट आवर प्रोग्राम एंड। सो दिस इज, जो हम मैथमेटिकल वे में जैसे हम कंपैरिजन करते हैं उसी को हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट, एज अ फ्लो चार्ट प्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ flow chart based on loop. Here another example is a flow chart to print whether a number is odd or even. ठीक है, we check in mathematical way ना how a number is odd or even, उसी को बस हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को हम पहले एल्गोरिथम बनाएंगे और उसके बाद एक फ्लो चार्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। हाउ वी विल चेक दिस, बिगिन, और यहाँ पे हम स्टार्ट भी लिख सकते हैं, इनपुट n, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 2. Modulus is the sign to got remainder. For example, if we divide 5 by 4, then we got remainder 1. Okay, that is the sign, here sign given to you, modulus. ठीक है, तो is remainder is equal to 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, n इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, दैट मीन्स नो होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, n इज ऑड। Okay, and at last our program end. Okay, now flowchart based on loop. ऐसे flowchart that is based on repetition of a section. ठीक है, कोई ऐसे प्रोग्राम जिस एक्टिविटी को हमको बार बार रन कराना हो, ठीक है, देयर वी यूज लूप. सो हियर वी कॉल फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन लूप. सो हियर इज द एग्जाम्पल, अ फ्लो चार्ट टू फाइंड 100 प्राइम नंबर. ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 100 प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर itself. Okay, so here we will start I equal to 2 and count is equal to 0. If I is prime, इज आई इज प्राइम, अगर प्राइम है, अगर यस होगा तो ये आपका फ्लो लाइन प्रिंट आई इज अ प्राइम नंबर. फिर ये आगे कंटिन्यू होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और कंडीशन आपका क्या अप्लाई होगा, क्योंकि हमें 100 तक 100 प्राइम नंबर निकालने हैं. ठीक है, तो ये बार बार क्या होगा, कंटिन्यू होगा वही प्रोसेस ना, जब तक आपको टोटल 100 प्राइम नंबर्स ना मिल जाए. ठीक है, और अगर ये कंडीशन नो होगा तो ये अगेन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 पे कंटिन्यू होगा और ये फिर से यहाँ से स्टेटमेंट रन होगा. ओके, अगर यस होगा तो फिर आपका यही स्टेटमेंट फॉलो होगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड होगा. इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, अगर नो है तो ये फिर से प्रोग्राम यहाँ से रन होगा. सो these are the some basic example of flow chart. I hope you all understand this term proper way, because this is very new and very interesting chapter, as we because we make our instruction with the help of flow chart, their different symbol used. You all watch this video carefully and understand all this term. After watching this video, you all do question answer of this chapter.